let's do all these transactions. So in MySQL server we have in MySQL server in SQL server, okay, in SQL server we have transactions. Under transactions we are working on introduction, begin, commit, rollback, save transaction, roll off, log file in transaction management, and implicit transactions and explicit transactions. For this, so what we are doing, let's do all these transactions using SQL Server Management Studio. Let's create the database database example example SBI Bank. Okay, SBI Bank database name, Okay. SBI Bank. Now, and will also create the tables related to SBI Bank. Okay, SBI Bank, and then we'll insert some data into it, and then we'll work on transactions. Okay, Okay. transactions, that's what we supposed to do. So I have done all this, so I'm pasting in this AI. Let's see what he's saying. Now let's do all this. So what he is saying, sure, below is a step-by-step guide to create a database name called SBI Bank and create I hope, wait, sure, below now let's create the database now. ऐसा कर देंगे और SQL सर्वर ले लेंगे और ये पूरा सारे कुछ क्लोज कर देंगे. We'll close all this. Let's open. So to open, again I'm telling you to open SSMS, Windows SSMS, SQL Server Management Studio. Now it's opening. Now it got opened. So you need to connect like this, and I have connected. Once you connect to the database, it will show like this, have a new query. Okay, have a new query. Once you got the new query, what you need to do is like do this, copy and paste it here. So what we are doing, we are in the master, so we are creating a database called SBI underscore bank. Before creating this, let's check whether SBI dot underscore bank में कभी ऑलरेडी क्रिएट किया एग्जिस्टिंग है नहीं है, वैसे भी देखना पड़ता है. तो ऐसा कभी ऐसा नहीं क्रिएट करता है, तब क्रिएट करता है कि यू कैन सी न्यू database. If I click on new database, it is showing like this. So when you create the database, there are two types of files are creating. Okay, row file and log file. I've told about that, and we'll create this first of all. Okay, let's create this, and we have created database SBI Bank. Okay, SBI underscore bank, we have created it, and next to that, what we need to do, we'll create two tables. So to create the two tables, first of all we need to go under SBI underscore bank. To go to SBI underscore bank, this is the command, use SBI underscore bank. So once like you can execute like this.
Now we changed to the database was changed to SBI underscore bank. So once after that we need to create the table. Here there is a table called customers. So we are creating the customers table. Now under this we will create customers table. Okay, so customers table we are creating customers table. To remove this command completed successfully, this is the result pane. To remove this control R. Now I am executing this. So there is a table called SBI underscore bank has been created. If I refresh it, I can check there is a bank called SBI underscore bank. And once after that, let's see. Okay, now SBI underscore bank was created. SBI underscore bank was created. In that, now we are creating a table. Okay, the table name called customers. So we are creating a table called customers. In that customers, we have customer ID, first name, last name, email, and all here. So now the table was created. If you can refresh this table, you can identify that there is a table got created named customers. Okay, and then we'll create the table called accounts. So now again we are creating the table called accounts. Now account was created. Now you can observe something here. Okay, something is like here customer ID int primary key here. So accounts का टेबल में क्या हो रहा है, अकाउंट आईडी है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी फिर से रिपीट हो रहा. ठीक है, यहाँ पे कस्टमर आईडी है, फिर से रिपीट हो रहा. तो कस्टमर आईडी कहाँ से लेके आ रहा कि कस्टमर टेबल से लेके आ रहा. ठीक है, तो उसी के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे फॉरेन की है. सो दिस इज़ द फॉरेन की बिकॉज दिस इज़ फॉरेन. आई मीन this native place, customer ID native place is this, but we are mentioning in accounts table also. So we need to tell that this is the foreign key. Okay, from which table? Customers table. Under that we need to give customer ID. You are getting my point? Okay, so like this we need to create. Suppose account ID hai. Now there is a type called, now we have only this. Fine, now we'll create accounts table also. Let's execute. Now we need to check here whether accounts table also created or not. Let's check. Accounts table is also created. Fine. Now see, first we created customers table, next we created accounts table, but the table was here the table is assigning like A next to C. Okay, here accounts पहले आया मगर accounts बाद में create किया, मगर accounts पहले आ गया. क्यों बोले तो ये से start हो रहा, ये C से start हो रहा, alphabetical order. Okay, and now control R. Let's see what he is saying. Let's insert some data to understand the transactions. What do you mean by transaction? Transaction means कुछ debit कर रहा, कुछ withdraw कर रहा, कुछ update कर रहा, ये सब transactions ही बोलते हैं, है ना. ठीक है, तो we are inserting some data into the table called customers. अभी customers की table क्या है, ये है. तो ये customer table और अच्छा से समझ में लेने के लिए क्या कर सकते हैं हम कि select star from customers. Now if you check this F5, so this is the table we have created long back. Okay, copy with headers. So what we need to do, what we will do, we will create a sheet. And we'll also maintain something. Okay, so what we will do here, if you see, we are creating a bank called SBI underscore bank. Yes, SBI underscore bank. So in that we created a table. So in that the table name called rename customers.
Yes, Yes. customers table. Now what? कस्टमर्स ईमेल बराबर। नेक्स्ट अकाउंट्स टेबल क्रिएट किया था अपन, तो अकाउंट्स का भी ले लेंगे। तो पहले तो ए इंसर्ट किया नहीं किया, ए इंसर्ट नहीं किया, तो एग्जीक्यूट कर देंगे टू रोज अफेक्टेड। नाउ इफ़ यू सी द सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स एग्जीक्यूट, 2 customers got executed. So if I copy then go to Excel and paste it here. Now this is the data what we are seeing over there. So this is the table. So one more table we have created. For that table, in terms of, so see, when I am executing this select star from table name, is that bank is changing? No, right? No. Then if we copy this, Control C and Control V, and once after that accounts, Control V, when I execute this, is that SBI bank is changing? No, right? So similarly Control R, similarly accounts का टेबल यहाँ पे आ जाता है। तो देखो कस्टमर्स में जा रहा, SBI बैंक बदल रहा, शीट्स में आ रहा, SBI बैंक बदल रहा, नहीं बदल रहा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो वैसा ही है, एक्सेल शीट वैसा ही है। तो यहाँ पे क्या है, इसका नाम है अकाउंट्स है, अकाउंट्स है। और उसके बाद क्या होना है कि यहाँ पे देखो इंसर्ट डेटा। नाउ अकाउंट्स में डेटा नहीं है, तो अकाउंट्स के पे भी इंसर्ट कर देंगे। जैसा इंसर्ट इनटू सब हो गया, एग्जीक्यूट कर देंगे। नाउ 2 rows got affected. If you see here, now if I paste it over here, this is the data. No, Control Z, Control Z, Control Z. No. So this is the reason. I think executed, 2 rows got affected. Select star from accounts. So this is the data actually. Copy. Control. Easy. So now if you see this, कुछ समझ में आ रहा? तो यहाँ पे अकाउंट्स की टेबल यहाँ पे था और कस्टमर्स की टेबल यहाँ पे था। कैसे कभी कभी ऐसे ही एक्सेल शीट पूरा दे देते और हमको काम करवाना बोल के बोलते। तो यहाँ पे क्या है, और मोनिका के पास जाएंगे। मोनिका क्या बोल रहे हैं? Transactions. Now let's start. Now we will demonstrate various transactions. So now what we are doing, begin transaction go. So let's copy this, and now this part is done. This part is done. Let's have a new query. This query is all about creating new query. Now I am just starting this. So now transactions, step 4, transactions, Control K, Control C. Now let's begin the transaction. F5. Transaction was started. Okay, transaction started. Then second, assuming we want to update the balance of an account and then commit the transaction. So commit the transaction. I mean, now this server, this entire session is in begin transaction. Okay, this entire, I mean to say, if I close this, you know that if I close this, there are uncommitted transactions. Do you wish to commit these transactions or not? The question, if you copy message, Yes. this message when I'm executing this is saying like there are uncommitted, Control K, Control C, there are uncommitted transactions. Do you wish to commit these transactions or not? I mean, I've executed begin transaction. That's the reason when I'm closing this, it is saying like there are uncommitted transactions. Do you wish to commit these transactions? I mean, आप commit करना चाह रहे हैं, कुछ begin किया तो begin किया, begin बोले तो start, begin किया
तो कमिट करना चाह रहा है कि नहीं बोल के पूछ रहा है। तो अगर कमिट करना है तो यस करो, नहीं तो नो करो, नहीं तो कैंसिल करो। तो यही बोल रहा हूँ। तो हम क्या कर रहा, बिगिन किया तो एक ट्रांजैक्शन करने का है। तो ये ट्रांजैक्शन अभी करेंगे कि यहाँ पे अपडेट कर रहा, किसको अपडेट कर रहा, अभी अकाउंट्स को अपडेट कर रहा। अकाउंट्स बोले तो क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम accounts. Now control Z, accounts. Okay, so if you execute this, there is a accounts table. We are making the account ID 1 as plus 200 of transaction. बोले तो अभी उसका 1000 है, उसको प्लस 100 कर रहे हैं, किसको, अकाउंट ID 1 को। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ यही लाइन अपडेट कर सकते हैं तब जब आप ये देख सकते हैं ना, टर्मिनेशन सिंबल, ये एक ट्रांजैक्शन, ये एक एंड हो रहा, बाद में और एक ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, execute one row affected, and if you see in the select star from accounts, now it will be 200 plus 1200, but the matter is, but see, I have updated 200 to this. Okay, hello Rafika. Yeah, okay. So I'm updating 200 to this. Now it got updated, but I haven't committed. So what happens if I see control copy, if I check in another this, so if I execute now, what will happen? So it is not executing because this table is already busy. आप ये देख सकते हैं, ये ऐसे ही छोड़ देंगे, I mean ऐसे ही we'll live like this only. I have just executed this, but I'll go into this and now I will commit the transaction. Now if I commit the transaction and go, now if you check here, it is also coming. You're getting my point? Yes. Before it was loading, but now the query got executed. Got it? And you are seeing some time over here, 000030. So this is the time that it has been taken to execute this query. You are getting my point? Because the table was very busy with begin transaction. You are getting my point? Okay. It is very busy. Again, if I see, again let's check. Again I'm updating with 200, but I didn't mention that there is a begin transaction. What will happen? So if I see select star from accounts, now it was 1200. Let's check. Let's do both at the same point. Okay, both at same point. So if I execute both, now see execute. So what it is saying, there is no commit transactions. I mean, I have executed from here. So it is saying like there is no, the commit transaction request has no corresponding begin transaction. इसका मतलब क्या है, कॉपी कर देंगे आप। ये देखो, मैं यहाँ से एग्जीक्यूट किया, ठीक है, यहाँ से एग्जीक्यूट किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एग्जीक्यूट करे तब मैं क्या किया, बिगिन ट्रांजैक्शन बोल के नहीं किया फिर से, ठीक है, नहीं किया तो वो नहीं किया, सिर्फ मैं ये अपडेट और ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स बोले तो अकाउंट्स का टेबल पूरा दिखाना है, तो वैसे दिखाया नहीं, दिखा दिया 1200 था, है ना, 1200 था, वही दिखा रहा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अपडेट करा बोल के बोल रहा, वो अपडेट कहाँ से, अपडेट मैसेज में दिखा रहा, और जो भी सिलेक्ट का है वो रिजल्ट में दिखा रहा। तो अपडेट का जो भी है, अपडेट ये जो भी कर रहा हूँ मैं, वो अपडेट हो गया। किसको अपडेट हुआ, 2 rows गॉट अफेक्टेड, आई मीन
वेयर अकाउंट आईडी 1 है वहाँ पे अपडेट हुआ है ना, अकाउंट आईडी 1 में अपडेट हुआ। बाद में ये कमिट ट्रांजैक्शन भी एग्जीक्यूट किया तो उन्होंने क्या बोल रहा, आप द कमिट वॉट यू हैव डन, आई मीन टू से उन्होंने क्या बोल रहा है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कंट्रोल सी होता है, ये कंट्रोल सी होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोल रहा है कि द कमिट ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट, आप कमिट ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट दे रहे हैं मगर उसका करस्पॉन्डिंग बिगिन ट्रांजैक्शन नहीं है। The request has no corresponding begin transaction. I mean to say when you're doing this, you're supposed to do this before that. Okay. Getting my point? तो Yes. ऐसा बोल रहा। अभी देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स में देखो वो 1400 रहता, क्यों 1400 है कि 1400 है, यहाँ पे 200 बढ़ा दिया तो उसी के लिए वो अपडेट हुआ मगर बिगिन ट्रान नहीं था। फिर भी देखो, फिर और एक बार समझ में देने की कोशिश करता हूँ। अभी बिगिन ट्रांजैक्शन है ना, तो बिगिन ट्रांजैक्शन ऐसा कर सकते हैं, एग्जीक्यूट हो गया, कंट्रोल आर, फिर भी देखो कमिट ट्रांजैक्शन, कंट्रोल सी, यहाँ पे देखो कंट्रोल बी, कमिट ट्रांजैक्शन, बिगिन का ट्रांजैक्शन अभी कर चुका हूँ तो अभी कमिट ट्रांजैक्शन बोले तो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली आ जाता, ठीक है। मगर यहाँ पे देखो ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये फर्स्ट स्टेप बिगिन ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट स्टेप, ओके, फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप इज लाइक कमिट ट्रांजैक्शन, व्हाट इट, second step is commit transaction. But when you need to do commit transaction, when you feel like it is correct, okay, when you feel like it is correct, I mean to say, let's say अभी देखेंगे, फिर से देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स है, ठीक है, अभी एग्जीक्यूट कर रहा तो यहाँ पे 1400 है तो हम 1400 है तो हम क्या करेंगे, इससे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि बिगिन ट्रांजैक्शन बोल के लिख सकते हैं, बिगिन ट्रान भी लिख सकता है, ठीक है, बिगिन ट्रान ट्रांजैक्शन बहुत सेम ही है, ये बिगिन ये शॉर्टकट है, बिगिन ट्रान बोले तो ये बिगिन ट्रान लगाते ही हम अपडेट कर देंगे कि 200 अपडेट कर देंगे, तो एग्जीक्यूट करते ही one row got affected. When you see the select star from accounts, it will be 1600. How much? Because we updated 1600 to account ID 1. Yes. But I feel that 1600 is wrong. I feel like that account, that 1600 supposed to this 200 supposed to go to account ID 2, not account ID 1. Okay. But I've mistakenly executed this. Okay. Executed. Now what I need to do? This 1600 supposed to be 1400. Now it's supposed to go back. So what I'll do for that? I have executed this in begin tran. I have executed this in begin tran. So I can do a rollback. Roll back. Okay. Roll back. ये roll back क्या है? Once you click on execute on roll back, now command got completed successfully, and now if you check select star from accounts, it will be 1400. Okay. Got it? It was Yes. not saved. It haven't gone. अगर फिर से देखो बिगिन ट्रान में एग्जीक्यूट कर रहा 1600 हो जा रहा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स में गया तो 1600 हो जा रहा, मगर अपन रोल बैक, सिर्फ रोल बैक ऐसा एग्जीक्यूट करे तो वापस हो जा रहा. Yes. Got it? Got it. Similarly, if you are updating now with begin tran, updating one row affected, now we got 1600. If you want to make this permanent, then you need to execute this commit transaction, so it will be committed. Now once it is committed, you can't roll back again.
Okay. Okay, got it? Okay. Yes. Now that is the main agenda of having begin and commit and rollback. ये तीनों को पकड़ के इतना इतना लिख सकता है कि बहुत ज़्यादा लिख सकता है, ठीक है? हाँ. ये बहुत ज़रूरी है Yes. डेटाबेस में। ये कहाँ आता? वेयर इट विल कम अंडर ट्रांजैक्शंस ऑफ एसक्यूएल सर्वर और एनीथिंग। उसमें हम Yes. रोल बैक सीख लिया, कमिट सीख लिया, बिगिन सीख लिया। Yes. So we'll also complete the save transaction. We'll also see the role of log The file role in of the transaction law. management, and we need to see the implicit and explicit transactions. Got it? Yes. 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 And now let's see rollback transaction. Rollback transaction, I have told you that rollback transaction, okay? Okay. So what he is saying, see, again I'll also repeat. Let's do this operation also. What he is saying, rollback operation. Control C. अभी देखो, Control V. So यहाँ पे समझ में लो, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल के कंट्रोल C, नहीं, यहाँ से यहाँ तक कमेंट, ठीक है? तो बिगिन ट्रांजैक्शन, फिर से बिगिन ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उसके बाद फिर से अकाउंट्स को अपडेट कर रहा है। बोले तो अपडेट अकाउंट्स टेबल को अपडेट कर रहा है। क्या कर रहा है? बैलेंस -300 कर रहा। किसको कर रहा? अकाउंट ID 2 को, अकाउंट ID 2 को। तो अभी पहले हम ये देखना है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स, what is the amount we have for account ID 2. Okay, account ID 2 is 500. Now if we are debiting 300, the balance is 200, right? So Right. what we are doing, control K control C, what we are doing, we are executing with begin transaction. So we are executed. Now it got executed. Now if you see the select star from accounts, so the answer is 200, right? Because we debited 500 minus 300, correct? Correct. Now but we felt that is something wrong. Okay, that's what rollback. If something is going wrong, then rollback transaction. So what will happen when you see select star from accounts, 500 वापस आ गया, Right. got it? So ये सारे कुछ एक ही बार भी कर सकता है. One row got affected. Now it will be, when you check, it will be 500 only. Got it? Yes. So these all transactions are terminating with, पहले ये हो गया, बिगिन ट्रांजैक्शन हो गया, उसके बाद ट्रांजैक्शन के लिए देख रहा, तो ट्रांजैक्शन आ गया, ट्रांजैक्शन आने के बाद अगर लगा ये रॉन्ग है तो रोल बैक कर देंगे, ऐसा है, ठीक है? उसके बाद सेव ट्रांजैक्शन क्या है? सेव ट्रांजैक्शन क्या है कि ये सेव ट्रांजैक्शन कैसे लिखता, पहले ये वो भी देखना पड़ता है। ये 4 एंड कॉपी ट्रांजैक्शन वो भी ले लेंगे। तो अभी यहाँ पे देख लो, एंटर कंट्रोल V, सेव ट्रांजैक्शन, ये सारे कुछ कमेंट में लगा देना। यू कैन ऑल्सो सेव ए ट्रांजैक्शन पॉइंट टू रोल बैक लेटर। आई मीन टू से रोल बैक लेटर, I'll explain you. So see now what he is saying. Now he is starting with begin transaction. Okay, now we executed, fine. Then there is a save transaction point 1, that is also we executed. Then we are updating the balance of account ID 1 to -100. पहले select star from accounts में क्या था, इसमें क्या था कि 1600 थे, तो उसमें से हम अपडेट कर रहा है कि -100, तो -100 कर दिया, तो फिर भी select star from accounts में देख लो कि 1500 रहता है,
-100 कर दिया। तो उसके बाद इफ़ यू वांट टू अंडू द लेटेस्ट अपडेट बट कीप द ट्रांजैक्शन ओपन, ओके, कीप द ट्रांजैक्शन ओपन, आई मीन रोल बैक ट्रांजैक्शन सेव पॉइंट. Now let's check the table what happened. 1600 it was rolled back and commit transaction go. Now what it is happening? Okay. What? Okay. I'll explain you. We'll take one more example of this. We'll ask him so that because it is not up to the mark to understand. Okay. Role of log file in transaction management, implicit transactions and explicit transactions. Implicit transactions में क्या क्या है? DDL है, DDL statements होता है. DDL बोले तो जैसा टेबल क्रिएट करना है और इसके स्टार्ट से ट्रांजैक्शन फॉर यू SQL सर्वर स्टार्ट. एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन दे आर डिफाइंड बाय द यूज़र यूजिंग बिगिन. एक्सप्लिसिट तो आपको समझ में आ गया, बिगिन ट्रांजैक्शन कमिट रोल बैक. तो इम्प्लिसिट का कुछ देखना पड़ता है. तो इम्प्लिसिट का एग्जांपल क्या है? सेट इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शंस ऑन go, this will automatically start a transaction. Create table, test table, id int. You need to commit or roll back manually. What will happen? So this is the query which he given for implicit transactions. Okay, so set implicit transaction on, ये सारे कुछ दिया था, ये सारे कुछ एग्जीक्यूट किया तो क्या आ रहा है? कमांड completed successfully. Okay, but what is What happening? That's what I was able to tell you, but even I'm not able to understand what he is about to explain. ये क्या है? So let's see. तो यहाँ पे क्या हुआ? सिंप्लीकेशन ट्रांजैक्शंस ऑन गो, दिस विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट ए ट्रांजैक्शन id int. यू नीड टू कमिट और रोल बैक मैनुअली. ओके, फिर से बताएंगे, फिर से करेंगे. ये देखो न्यू क्वेरी है, ये ट्रांजैक्शंस है, ये टेस्ट टेबल को टेबल्स बनवा देंगे तो ज़्यादा होता है. तो ये पहले बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है. और उसके बाद ये कर रहा बोल के बोल रहा. उसके बाद हम ये टेबल देख लिया तो क्या होगा? आईडी है, कुछ नहीं है उसमें.
तो यहाँ पे रोल बैक किया तो हो जाता क्या? रोल बैक सक्सेसफुल। नाउ अभी इसको रिफ्रेश करो। समझ में आया आपको कुछ? नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो मेरे को उतना समझ में नहीं आया, फिर भी समझ में आया, कितना आया वहाँ तक आपको समझ में देने के लिए कोशिश करता हूँ, ठीक है? हेलो हेलो मैडम, यस यस। आपको ये सोचो कि पहले इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शंस और 2 ट्रांजैक्शंस था अपन के पास। कितना ट्रांजैक्शंस था? 2 ट्रांजैक्शंस। आपको मालूम है इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शंस और एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शंस। इम्प्लिसिट बोले तो जैसा ऑलरेडी है और एक्सप्लिसिट जो ऑलरेडी है कुछ ऐसा है। तो इम्प्लिसिट में क्या क्या आ रहा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इम्प्लिसिट में क्या क्या आ रहा? इम्प्लिसिट में आ रहा है कि DDL कमांड्स, DDL स्टेटमेंट्स। DDL बोले तो क्या है? फिर से DDL बोले तो क्या है कि DDL बोले तो जैसा DDL बोले तो एक लैंग्वेज होता है, जैसा DML होता है ना, आपको मालूम नहीं है? तो DDL बोले तो क्या है, जैसे इसमें क्रिएट ऐसा रहता है, सेलेक्ट भी नहीं रहता है, क्रिएट, अल्टर, ये सारे कुछ रहता है DDL में, ठीक है? तो ये implicit transactions are automatically started by SQL server when certain statements are executed. For example, if you execute a DDL statement, SQL server starts a transaction for you. Okay, it will only start the transaction for you. ठीक है? तो क्या है कि explicit transactions क्या है? पहले explicit transactions क्या है? begin है, transaction है और commit है, rollback है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देख लिया तो हम सिर्फ 2 की बात कर रहे थे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट में तो बिगिन है, कमिट है, रोल बैक है और ट्रांजैक्शन भी है, सेव ट्रांजैक्शन, ये सारे कुछ इम्प्लिसिट है, नहीं एक्सप्लिसिट में आ रहा, एक्सप्लिसिट में आ रहा। तो इम्प्लिसिट का आपको एग्जाम्पल समझ में देने के लिए देख रहा हूँ। देखो ये इम्प्लिसिट की बताया था। तो क्या है इम्प्लिसिट का? कि इम्प्लिसिट का क्या है कि इम्प्लिसिट का आप ऐसा लगा सकता है कि सेट इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन ऑन बोल के लगाना, ठीक है? ऑन बोल के लगा के बाद में गो लगाना। तो ये सारे कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप। ये सारे कुछ एग्जीक्यूट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ये टेस्ट टेबल्स बोल के ये टेबल क्रिएट कर रहा। कौन सा टेबल? ये इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शंस ऑन है। अभी क्लोज करे तो ये क्या बोल रहा है कि क्लोज हो जा रहा है, मगर ऐसा नहीं। जैसा कमिट, बिगिन ट्रांजैक्शन और रिमेन न्यू क्वेरी, ठीक है, फिर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेट इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शंस ऑन किया तो फिर से क्लोज कर रहा तो ये कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, कैंसिल। तो सेट अभी ये पहले ये किया मैडम, सेट इम्प्लीकेशंस इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन ऑन बोल के किया, ये एग्जीक्यूट हुआ। बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेस्ट टेबल तो ऑलरेडी है, उसी के लिए वो नहीं आता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ट टेबल्स बोल के लिखो बोल के बोल रहा हूँ। तो ये टेबल क्रिएट होना है, एग्जीक्यूट करे तो क्रिएट होना है। अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश कर चुका है तो आपको यहाँ पे दिखता है कि टेस्ट टेबल्स होना है वहाँ पे। नहीं दिख रहा, ठीक है, नहीं दिख रहा, मगर क्यों बोले तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे बिजी है वो। तो टेस्ट टेबल्स क्रिएट हुआ ना मैडम, अभी टेस्ट टेबल्स क्रिएट हुआ ना। देखो आप ऐसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, वो क्रिएट हुआ नहीं हुआ बोल के आपको समझ में कैसा आता है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
टेस्ट टेबल्स ऐसे देखे तो आपको समझ में आता। ये क्रिएट हुआ, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा मगर ये क्रिएट हुआ। अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस टेबल्स भी आप देखे तो ना, ये क्लिक करके देखे तो ना आपको दिखता है टेस्ट टेबल्स बोल के क्रिएट हुआ है ना, क्रिएट हुआ। मगर यहाँ पे देखो अगर मैं रोल बैक कर दिया, रोल बैक, सिर्फ रोल बैक कर दिया तो टेबल ही चले जाता। अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस डॉट टेबल्स में देख लिया तो टेस्ट टेबल है, टेस्ट टेबल्स नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? अंडरस्टूड? पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या करा कि ऐसा देख लो कि बिगिन ट्रांजैक्शन, कमिट ट्रांजैक्शन कहाँ है वो, हाँ रोल बैक, कमिट ट्रांजैक्शन, ये टेस्ट टेबल नहीं है। ऊपर का देखे तो यहाँ पे क्या करा, बिगिन ट्रांजैक्शन, ये सारे कुछ क्या है अपडेट कर रहा था, अकाउंट्स का टेबल में अपडेट कर रहा था। क्या कर रहा था? अकाउंट्स का टेबल के अंदर अपडेट कर रहा था। मगर यहाँ पे क्या है, ये इम्प्लिसिट में क्या है, एक टेबल ही क्रिएट कर रहा अंडर ट्रांजैक्शन। जैसे बिगिन ट्रांजैक्शन है वैसे ही है ये भी, वैसे ही। भले तो आप ये देख लो, ये देखो, ये देखो, ये देखने के बाद ये देखो न्यू क्वेरी है, में अभी ये करेंगे। और ऊपर देखो, ये देखो, दो भी सेम है मैडम। जैसा बिगिन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट बोथ आर सेम। दिस इज इम्प्लिसिट and this is begin transaction. These all comes under explicit, right? As we know, you getting my point? You can see here implicit transactions comes with DDL. I mean to DDL, I have told you about DDL. DDL means to create some tables and all, it comes under. If I ask DDL what is if I ask like this, it will show you all the DDL commands and to create and all. So in this we are updating a table, but here we are creating a table. Okay, here we are using begin transaction, but here we are using set implicit transactions on. तो तब यहाँ तक हो रहा है, तो यहाँ तक हो रहा है टेबल्स डबल एस, यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक हो रहा। तो एग्जीक्यूट करेंगे तो कमेंट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो टेबल क्रिएट हो गया। कौन सा टेबल क्रिएट हो गया? टेस्ट टेबल्स बोल के टेबल क्रिएट हो गया। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स कहाँ है? यहाँ पे नहीं है। तो अभी देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल टेस्ट टेबल्स। सो इफ यू एग्जीक्यूट दिस, I mean we created this till we selected from here and we executed. If you execute this, right, one table was created. Got it? One table was created. So the table name, we have only one column which is ID, but I don't want to create this table. Might be this table is wrong, so I can do just roll back. So roll back. Now if you see the select star from test tables, it will be not there, invalid object name. Got it? Yes. Something understood? थोड़ा थोड़ा। Yes. सेम है ना? हाँ सेम ही है। ये इम्प्लिसिट में क्या कर रहा, अब अगर ये देख लिया ना, ये कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। देखो ये सारे कुछ क्या बोलते हैं, DDL बोलते क्या है, ये पूरा टेबल क्रिएट करना वही बोलते हैं। फिर से बोलो, देखो। Yes. बस है मैडम। आई विल क्लोज दिस टुडे। सी DDL बोलते क्या है, क्रिएट आल्टर ड्रॉप। मैं वही बोला था ना आपको, क्रिएट आल्टर ड्रॉप। ये काम क्या है ना मैडम, कभी एक ट्रांजैक्शन में क्या होता, एक टेबल, हर वक्त टेबल क्रिएट करने का जरूरी क्या है बोलो?
तो एक ट्रांजैक्शन में क्या करते हैं ना, टेबल वहाँ पे ही क्रिएट करता, वहाँ पे ही ड्रॉप कर देते। Right. ओके, यू अंडरस्टूड? Yes. तो ऐसा भी होता है। तो अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे सेट इम्प्लीकेशंस ऑन कर रहा है, फिर भी ये भी देखो न्यू क्वेरी देंगे। तो पहले सेट इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करा, तो इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन में ऑन है अभी। तो उसी के अंदर हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट कर रहा। कौन सा टेबल? क्रिएट सैम्पल टेबल एग्जीक्यूट कर रहा, टेबल क्रिएट हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है कि चेक द ट्रांजैक्शन स्टेट। अभी ट्रांजैक्शन स्टेट क्या है, ट्रांजैक्शन स्टेट क्या है वो देख लिया। तो ट्रांजैक्शन स्टेट काउंट 1 है, काउंट है 1 है, और दिस शुड रिटर्न 1 इंडिकेटिंग दैट देयर इज एन एक्टिव ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा? ये ट्रांजैक्शन है, एक चल रहा, एक ट्रांजैक्शन चल रहा अंडर इम्प्लिसिट। अगर कमिट गो कर दिया तो यू मस्ट इधर कमिट और रोल बैक द ट्रांजैक्शन। अभी रोल बैक कर दिया तो अभी यहाँ पे देखो एक ट्रांजैक्शन है, ऑन काउंट है। तो यहाँ पे देखो अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये क्रिएट किया हम, ये टेबल है क्रिएट हो गया, ठीक है, आईडी नेम बोल के। मगर ये कमिट किया तो कमिट हो जाता है, ठीक है। अगर रोल बैक दिया, इफ यू डिसाइड नॉट टू कीप द चेंजेस यू कैन रोल बैक, यू जस्ट click on this and roll back. When you see the select star from sample table, it will not come. Got it? Understood? Yes. Now after committing or rolling back, हम रोलिंग बैक कर दिया ना, रोलिंग बैक कर दिया, उसी के लिए रोल बैक तो कर दिया, उसी के लिए अभी ये करे तो क्या आना है, 0 आता है, 1 आ रहा। ये ट्रांजैक्शन 0 आना है एक्चुअली। फिर भी ट्रांजैक्शन है, ये कमिट कर देंगे। देखो वो रोल बैक नहीं हुआ, ये हुआ, फिर से देखो अभी 0 आता है। अंडरस्टूड समथिंग? तो ये DDL समझ में लो कि DDL बोले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिएट आल्टर ड्रॉप, ठीक है। और कल कंटिन्यू कर देंगे। आपको थोड़ा लगता होगा बढ़िया नहीं है, ठीक है।